Hello everyone, if I'm audible and visible, can you just confirm? Okay, I guess I am. So, yeah, let's start everybody. Okay, hello Yuvraj, how are you? So, in the meanwhile, we just wait for a couple of minutes for other people to arrive, right? Let me just finish off a couple of introductory aspects. People, my name is Ravi Manoram. I'm an alumnus of FMS and TTU. I'm an author and educator, and the rest of the profile is here, people. Right, and so follow me on Unacademy, and just find me on Unacademy, RAVIMANORM, and join my Telegram group so that you get all the notifications. You get various resources that will help you prepare and ace the exams as well. And should you choose to join Unacademy, use my code RAVIFMS and you will get 10% discount, and you will get my mentorship as well, right? So on the plus course right now, critical reasoning, comprehension, para-based questions, all of these things are going on, right? And so these courses are recorded, they're available. These courses are going on from the 29th of October. I'm starting a new batch for CAT 22 aspirants on reading comprehension, and I'm also starting some free classes at 12 p.m. every day on grammar, right? So I would advise everybody to follow me on Unacademy so that they give you notifications whenever the classes start. And you can also join the group wherein I upload all my schedules and all the resources and everything. So some CAT 22 batches are going on, people. You can join these batches right now, and a final revision batch is also going on, so you can kind of join this as well. So don't forget to use my code RAVIFMS and you will get 10% discount. Yeah. And Unacademy has a fantastic 6 months offer going on right now for 16,400. You can take advantage of this, and you can get further 10% discount by using my code RAVIFMS. So these are just mapping, these codes, they kind of connect a subscriber with the educator so that you are mentored by them, right? Hello Kanupriya, how are you? Right. I hope you're doing good. So you can go for the iconic subscription, people. Again, if you use my code, you'll get 10% discount, and there's some bumper iconic offers available. That is, you get more times when you book mentorship session with an educator or any successful person out there. And some test series is going on, people. You can enroll for these as well, and you can use the ask a doubt feature. So people, we had covered about 10 questions in the previous classes. So from today we start from question number 11. So 5 jumbled up sentences related to a topic are given. 4 of them can be put together to form a coherent paragraph. So basically this is an odd man out question, people. Let's try an attempt. एक बार आप करें, उसके बाद then I'll explain the answers and everything, right? For the people who are attending the class for the first time, previously if you just search, you'll find that I have uploaded a session on, a brief session on how to go about solving the questions, para-based questions and all as well. And on alternate days, one day I'm taking para-based PYQ questions, previous year questions, and on the other day I'm taking reading comprehension questions, people. So you can attend all of these sessions. Follow me on Unacademy and follow these here. I'll share the other video links as well, and so that that will help you to practice, है ना? चलो करते हैं जरा इनको. Anyone? What could be the answer to this question? Come on, everybody.
Gunjan, okay. What about others? सोचो जरा. Kanupriya, why did you delete the message? अच्छा, you also saying E? Are you sure about that? सोचो जरा. Okay, so how do we go about solving these kind of questions, people? देखो, first of all, of course, try and find the central idea, है ना? And then see which 4 sentences hover around that central idea. ठीक है? लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि मान लो ये 5 सेंटेंसेस हैं, 6, 7, 8, 9, 10. अब ऑथर ने 6 को ना पिकअप किया, 7 को ना पिकअप किया, एंड लेट्स से द ऑथर पिक्स अप क्वेश्चन नंबर 8. जस्ट गिव मी 1 सेकंड. Sorry folks, for some reason the alarm bell went off. Anyway, so yeah, so as I was saying, मान लो ऑथर ने 6 और 7 सेंटेंस को पिकअप नहीं किया, 8 सेंटेंस को पिकअप करके उसने जो है पैसेज में डाल दिया. ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है ना कि सेम पैराग्राफ से ऑथर सेंटेंस पिकअप कर लेता है. ठीक है, सो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? वी शुड ऑल्सो लुक फॉर अ पेयर, है ना. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से DA इज अ पेयर, है ना, and from the remaining sentences of B, C and E, we will then see which 2 sentences are close to this one. The one which is not is your order by not. Not saying that E is the answer. This was just supposed to be an example. But इसमें देखते हैं आंसर क्या होगा, है ना. So it says you can observe the truth of this in every e-business model ever constructed. Monopolize and protect, है ना. Monopolize and protect data, है ना. Economists and technologists believe that a new kind of capitalism is being created, different from industrial capitalism, as was merchant capitalism. In 1962, Kenneth Arrow, the guru of mainstream economics, said that in a free market economy, the purpose of inventing things is to create intellectual property rights. And then it says D, there is alongside the world of monopolized information and surveillance a different dynamic group, a different dynamic growing up. Information as a social good incapable of being owned or exploited, information as a social good incapable of being owned and exploited, yet information is abundant. Information goods are freely replicable. Once a thing is made, it can be copied and pasted, infinitely, it says. Yet information is abundant, है ना. अब ये yet किसको ये कह रहा है कि information is abundant, right? ठीक है, अब ये हमें देखने की जरूरत है ना. Now here we can see that in C it says that free market economy that in a free market economy the purpose of inventing things is to create intellectual property rights, है ना. So the entire purpose of this free market economy is to create intellectual property rights, है ना. But then information is freely available, तो intellectual property rights कहाँ रहा, है ना. So you can see this contradicts this one. There is alongside the world of monopolized information surveillance a different dynamic group growing in which case information as a social good incapable of being owned or exploited. तो ये भी हमें देखने के लिए मिल रहा है ना. And then you can see that this yet can also go along with A. You can observe the truth in this in every e-business model ever constructed, monopolize and protect the data. So you can see this also is kind of relating with C, है ना. So CAD, है ना, perhaps it could then become an order, and then CAE, and then we can also have D here because all of them are talking about information. The first couple of sentences they're talking about information being a product of intellectual property rights,
and that the e-business models are trying to monopolize and protect the data. But then contrary to this, we are seeing that information goods are also freely available and replicable as well, है ना? तो ये चीज़ है, right? But then B is talking about a different kind of industrial capitalism, a different kind of capitalism which is different from industrial capitalism, as were merchant capitalism, है ना? Therefore the odd man out in this case then becomes this B. B is the right answer. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. Let's do question number 12. Now in this case you have to arrange the 4 sentences, people. Try and find a pair and then accordingly try and arrange the sentences. Yes, everybody, what could be the order in these sentences? Okay, Gunjan, that's a good attempt. That's a good attempt. Think of pairs. Can we have a pair here? What are the pairs in this case? I think that would give you a hint towards the answer. और ये जो वन में जो ये but लिखा है, ठीक है, ये किसे contradict कर रहा है? Let's try and understand this, and that will again give you a hint towards the answer. Anyone? चलो देखते हैं. I'll try and explain it. But the attention of the layman, not surprisingly, has been captured by the atom bomb, although there is at least a chance that it may never be used again. Of all the changes introduced by man into the household of nature, controlled large-scale nuclear fission is undoubtedly the most dangerous and most profound, that is deep. So the danger to humanity created by the so-called peaceful use of atomic energy may, however, be much greater. So the danger created to humanity by the so-called peaceful use of atomic energy may be greater. है ना, जो जैसे nuclear power plant and so on and so forth. The resultant ionizing radiation has been the most serious agent of pollution of the environment and the greatest threat to man's survival on earth, है ना.
ठीक है। अब ये जो बट है, ठीक है, बट जो है ना, द डेंजर टू ह्यूमैनिटी क्रिएटेड बाय द सो कॉल्ड दिस थिंग एंड द रिजल्टेड, ये भी जो बात हो रही है ना। सो यू कैन सी दैट 4 फर्स्ट ऑफ ऑल इज इलैबोरेटिंग ऑन 3, है ना, ठीक है, इट इज इलैबोरेटिंग ऑन 3, राइट। वेट, नो, ठीक है। 4 जो है, द रिजल्टिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन, है ना, हैज़ बिकम द मोस्ट सीरियस एजेंट ऑफ पोल्यूशन, है ना, ऑफ द एनवायरनमेंट। अब जो ये लिखा है द रिजल्टिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन कहाँ से निकल के आ रहा है? इट इज़ फ्रॉम द न्यूक्लियर फिशन, नो। तो इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। कनुप्रिया, ओके, ठीक है, दैट्स अ गुड अटेम्प्ट कनुप्रिया, थोड़ा सा और सोचो। तो इसमें आपका 2 और 4, यू नो, दैट बिकम्स अ थिंग, एंड देन द डेंजर टू ह्यूमन। और ये न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन की बात कहाँ हो रही है ना, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, है ना, वो तो आपका एटॉमिक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम देखेंगे, है ना, राइट। तो ये चीज़ है ना। तो 3 एटलीस्ट वी नो दैट इट विल कम आफ्टर 2, है ना। नाउ दिस आयोनाइजिंग रेडिएशन कैन बी अ ग्रेट थ्रेट टू मैन सर्वाइवल ऑन अर्थ, लेकिन हम सिर्फ किस चीज़ पर फोकस करते हैं? एटम बॉम्ब पर, जो कभी यूज़ नहीं होगा। सो इन बिटवीन दीज टू, you know, you can have 1. So this but is opening the sentence 4, and it is opposing the sentence 4. So we have 2, 4, 1 and 3, ठीक है। So this would then become the order. Clear hai people? Gunjan, Kanupriya and others who are watching. So here the answer would be 2, 4, 1, 3. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आज थोड़ा सा थॉट जो है आर्टिकुलेट नहीं हो पा रहा बिकॉज माई ईयर इज एकिंग लाइक एनीथिंग। ओके, लेट्स ट्राई एंड डू द समरी, try and find the main points and then see which option kind of touches upon as many main points as possible written in the fewest number of words. अब सोचो जरा इसमें आंसर क्या हो सकता है। इनसिक्योरिटी ऑफ द पीपल, ठीक है, थोड़ा सा एक कट गया था ये पार्ट ऑफ द लाइन, सो जस्ट राइट दिस, इनसिक्योरिटी ऑफ द पीपल। अब सोचो ज़रा इसमें कौन सा सेंटेंस होगा जो समराइज करेगा इस पैराग्राफ को। Papacy is related to the church, ठीक है, it can be the priests or the functions of the church, or you know, everybody who's involved with the church basically, है ना, had been confined to ecclesiastical function. Ecclesiastical function is, you know, typically we are talking about Christian functions here, ठीक है ना। कनुप्रिया, इसमें हमें समरी ढूंढना है, समरी, the option that would summarize the entire passage, तो summary करना है ना, that's what we have to do, ठीक है। This is the level of CAT people and this is something we cannot ignore.
है ना. और ये भी क्या एकदम फ्रेश CAT 2020 के क्वेश्चंस हैं. So you can understand कि लेवल क्या है CAT का. Anyone, what could be the answer to this question? So it says, with the Treaty of Westphalia, the papacy had been confined to ecclesiastical functions, that is, Christian functions वगैरह होते थे बस उसी में, and the doctrine of sovereign equality reigned, है ना. Sovereign equality means that in a country everybody is equal, nobody is above or below anyone, है ना. And we must know that the European, when you're talking about 16th 17th century, so 1651 की बात हो रही है, तो 16th 17th century में the church was a very dominant force in Europe. It kind of even governed kingdoms and monarchies during that time, to such an extent that most of the kings, they proclaimed themselves as children of God, है ना. अच्छा, by the way, जो ये मेरे सर के कारण ये जो कट रहा है, relationship between है वर्ड यहाँ पे, I'll just write it here. Sorry, कभी कभी ये formatting problems आ जाती हैं, है ना. तो ये चीज़ है. Anyway, so it says, with the Treaty of Westphalia, the papacy had been confined to ecclesiastical functions, and the doctrine of sovereign equality reigned. What political theory could then explain the origin and justify the functions of secular political order? है ना. So what political theory could then explain the origin and justify the functions of secular political order means, एक आपने अगर एक political order create किया है ना, जो secularity पे based है, किसी religion पे based नहीं है. Religion के base पे अगर political order होगा, then you can create, है ना, like these monarchs or the kings or the queens are the children of God, है ना. But अगर religion की बात ही नहीं है, तो how do you create, a political order in this situation? In his Leviathan, published in 1651, 3 years after the Peace of Westphalia, Thomas Hobbes provided such a theory. So Thomas Hobbes actually provided a theory for such a secular political order, है ना. He imagined a state of nature in the past when the absence of authority produced a war of all against all, है ना. So the point is, he imagined a state of nature in the past when the absence of authority produced a war of all against all. मतलब everybody was fighting among each other, है ना. So because there was no central authority. For example, why do you think the Britishers, or for that matter the Mughals, were able to gain victory over India? India was considered to be the golden bird of the past, but India was divided into so many fragments of kingdom that everybody was fighting against everyone else. So there was no central authority. First the Mughals came and they provided some kind of a central authority, but even in that case Mughals were confined to the northern India, है ना, not the entire country per se. But when the Britishers, they entered in first as traders, and then one by one they started to kind of capture different areas and started to rule over India, and then it was the Britishers who first provided a central authority to the country. ठीक है ना. Tarun, it's fine my dear, welcome, है ना. Okay, Kanupriya, that's a good attempt, but देखते हैं क्या आंसर इसमें निकल के आता है ना. War of all against all. To escape such intolerable insecurity, he theorized people delivered their rights to a sovereign power in return for the sovereign's provision of security for all within the state's border. So Thomas Hobbes का इसमें थ्योरी उसने क्या बनाया कि ऐसा है, जितने जनतागण है या जितने भी और भी लोग हैं, है ना, मे बी सम कुड बी powerful landowners and some could be smaller level of some kind of power and all that they might have at a smaller level. So all of them, what they should do is they should give their rights to the sovereign power, so whoever the central authority is, and then the central authority and the sovereign power, what it will do is it will provide security for all within the state's border. So that was the transaction relationship between the people and the sovereign power. So the sovereign state's monopoly on power was established as the only way to overcome the perpetual fear of violent death and war. Violent death and war because everybody would then be fighting against everyone. अब इसमें सोचो जरा कि main points क्या है, ठीक है. With the Treaty of Westphalia, papacy had been confined to ecclesiastical functions, which essentially means कि जो चर्च थी वो बस अपने क्रिश्चियन फंक्शंस वगैरह को जो है बैप्टिज्म एंड सो एंड सो फोर्थ, बस उसी में वो अपना कन्फाइंड हो गई थी. और
sovereign equality reigned, है ना. So everybody was equal in the eyes of the state, and but then there was no political theory, because earlier all the political theories of monarchy and all, especially in Europe, they were defined, you know, through church, through Christianity, है ना. So Thomas Hobbes, you know, he came in and he gave this, you know, theory for secular political order, that, you know, if there is no central authority, everybody would be fighting among themselves. So it is preferable that everybody give their rights to the sovereign power, and then the sovereign power will protect everybody, है ना. And this way we can overcome the perpetual fear of violent death and war. So everybody would not be fighting against each other, है ना, or among one another. And if they had to fight, they can unite, and they can fight some common enemy, है ना. So this way, had the kingdoms united, then we could have easily defeated the Mughals, we could have easily defeated the Britishers, but nobody was, you know, listening. तो मुगल इधर से आए, उसने किसी को डिफीट किया, सो सम अदर किंग वाज फीलिंग हैप्पी कि अच्छा हुआ, चलो वो डिफीट हो गया, है ना. व्हेन द ब्रिटिशर्स दे कैप्चर समबडी एल्स, तो क्या है कि सम अदर किंगडम वाज फीलिंग हैप्पी, बट दे डिडंट नो कि द नेक्स्ट नंबर वाज देयर, है ना, और अगली बार फिर उनको जो है डिफीट कर दिया गया. तो ये भी चीज़ है, राइट. तो ये फंडा है. नाउ लेट्स ट्राई एंड एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड देन सी कि आंसर क्या होगा. ठीक है. So Thomas Hobbes theorized the voluntary surrender of rights by people as essential for emergence of sovereign states. As essential for emergence of sovereign states. ठीक है. लास्ट में ये पॉइंट बात हो रही है. A seems to be right. आगे देखते हैं. Thomas Hobbes theorized the emergence of sovereign states as a form of transactional governance to limit the power of the papacy. So sovereign states इसलिए राइज हुआ ताकि वो papacy का पावर को जो है लिमिट कर सके. ठीक है. Now this option is wrong, because papacy, ठीक है, it was confined, but it was not just to confine papacy or to confine the church, इसीलिए sovereign state rise हुआ था. तो इसमें ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, है ना. So B is wrong. A ठीक है, फिलहाल अभी सही लग रहा है, पर देखते हैं C. C says Thomas Hobbes theorized that sovereign states emerged out of people's voluntary desire to overcome the sense of insecurity and establish the doctrine of sovereign equality. सो लोग चाहते थे कि हम लोग जो भाई इनसिक्योरिटी के माहौल से निकलें और हम एक सोवरेन इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट बनाए, इसलिए सोवरेन स्टेट स्टैब्लिश हो. नो, दैट्स रॉन्ग. ऑल दैट थॉमस हॉब्स डिड वाज ही गेव अ कॉन्सेप्ट दैट ओके, people should just surrender their rights or give their rights to them, है ना. So when you're using the word surrender, so basically you are not willingly doing it, but then you are forced to do it, otherwise there can be negative consequences, है ना. तो ये चीज़ है. तो ऐसा नहीं कि लोग ऐसा चाहते थे तो इसीलिए स्टेट जो है ये इमर्ज हुआ. सो दिस इज चेंजिंग द लैंग्वेज, इट इज चेंजिंग द कॉज एंड इफेक्ट सिनेरियो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. These says then Thomas Hobbes theorized the emergence of sovereign states based on a transactional relationship between people and sovereign state that was necessitated by a sense of insecurity of the people, है ना. necessitated जरूर था, but this insecurity of the people was not the cause of it. So because of the language, you can see between C and D, D then becomes a better answer. ठीक है. So that's the thing. चलो आगे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं. Now in this case we have to find the odd man out. चलो ट्राई करते हैं इसे ज़रा. Anyone, what could be the answer to this question?
Anyone? What could be the answer to this question? Tarun, E, Vaibhav, E. Okay. Chalo. Gunjan also says E. Anyone else? प्रीवियस वाले का आंसर था डी. ठीक है, ठीक है कनुप्रिया. Insecurity of the people was not the cause. It was a necessity. It was a necessity that led to the emergence of sovereign states. Anyway, let's look at question number 14, people. So the victim's trauma after assault rarely gets the attention that we lavish on the moment of damage that divided the survivor from a less encumbered past. So assaults rarely get the attention that we lavish on the moment of damage that divided the survivor from a less encumbered past. Means burden past. मतलब क्या है कि जो victim है उसके साथ कुछ हुआ है ना, right? And ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट, है ना. अब इस मोमेंट के पहले कि व्हेन द अटैक हैपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर विक्टिम, इस मोमेंट के पहले तो द पर्सन वाज कंप्लीटली फ्री, बट द मोमेंट दिस असॉल्ट हैपेंस, नाउ देयर इज दिस बर्डन दैट इज बीइंग कैरिड बाय दिस, है ना, दैट इज बीइंग कैरिड ऑन दिस विक्टिम, है ना, दैट इज गोइंग टू बी कैरिड बाय द विक्टिम, दिस पर्टिकुलर बर्डन, है ना, जो असॉल्ट उसके ऊपर हुआ है, राइट. लेकिन इसके बारे में कोई भी जो है कोई अटेंशन नहीं देता है ना. वन थिंग वी ऑफन डू विथ नरेटिव्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट इज sort the respective parties into different temporalities, है ना. It seems we are interested in perpetrators future and victims past, है ना. That temporalities means different space and time, है ना, that you're talking about. The different in terms of space and time, है ना. It seems we are interested in perpetrators futures and victims past. तो victim का past क्या है और perpetrator का future क्या है, we are interested in this particular case. C then says one result is that we don't have much of vocabulary for what happens into a victim's life after the painful past has been excavated, है ना. Even when our shared language gestures towards the future as the term survivor does, है ना. Shared language gestures towards the future as the term survivor does. So now because a person has been assaulted, है ना, every time that past is dug up, है ना, it is very painful for the victim, and every time, you know, in the sense of future when we talk about the person being a survivor, है ना, so that is again, you know, painful past has been escaped even when a shared language gestures towards the future as the term survivor does. तो ये survivor term भी जो है, बार बार अगर आप एक victim को survivor बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है, that person has survived trauma, वो trauma बार बार emerge होगा, है ना. That's what this option is saying. D is saying even the most charitable questions asked about the victim seems to focus on the past in pursuit of understanding or of corroboration of painful details. So people, they tend to ask the questions about the past, they tend to seek, है ना, painful details. As more and more stories of sexual assault has been made public in the last 2 years, the genre of the telling has exploded. Crimes have a tendency to become not just stories but genres, है ना. So the point is, E option is saying that the sexual assault, है ना, crime is already a genre in literature, right. Within crime, it seems that sexual assault itself has become a genre, right. That's what the author is saying in this case, है ना. So you can see that options E, C, B and A, they all focus on the victim of a sexual assault, है ना. All that D is saying that even the most charitable questions that seem to focus on the past, but what kind of a victim are we talking about, है ना, that is not being mentioned here. अब देखो context के वजह से अगर तुम देखोगे ना तो all of the sentences here
they seem to be part of the same context, है ना? But then it could just be that A, B, C and E they come together and D must be coming after a few sentences later on, है ना? Right? तो कॉन्टेक्स्ट के अलावा पीपल हमें थोड़ा पेयर पे भी अगर तुम फोकस करोगे तो वो काफ़ी तुम्हें हेल्प करेगा. एंड एज सच यू कैन सी दैट A, B, C and E they are very close to one another, right? So answer here is D, people. The answer here is D. ठीक है. तो नेटवर्क इशू है करो, चलो कोई बात नहीं, है ना. 15 देखते हैं पीपल. So now here once again we have to arrange the sentences in a particular order. I'll just give you some hint. It लिखा है. It also has 4 movable auxiliary. कौन है ये it? This configuration, कौन सी configuration के बारे में बात हो रही है? That will give you some hint towards finding the answers. Let's see. Let's hope everybody gets this particular question right. चलो करते हैं ज़रा इसको. Anyone? Tarun, Gunjan, Shubhra. Fantastic. I guess the question is clear, no? It is referring to a very large telescope VLT to 1 और configuration की बात 1 में भी हो रही है, 4 में भी हो रही है, and then now we have this entire configuration, this configuration labels. So 2143, that's perfectly correct. 2143 is your answer. Yeah. Oh, Siddharth, now you have also come down. Fantastic. Okay, so that's the answer to this question. 16. चलो ये करते हैं ज़रा. ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते आपको मैं मास्टर बना दूंगा पैरा सिंबल्स और पैरा बेस्ड क्वेश्चंस और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सॉरी पीपल, आई थिंक आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, इसलिए थोड़ी आवाज़ जो है ठीक से नहीं निकल रही है ना. तो ये चीज़ है. बट एनीवे, वर्क इज़ वर्क, सो इफ आई शेड्यूल समथिंग आई डोंट कैंसिल इट. चलो करते हैं ज़रा इसको पीपल. थैंक यू. स्पेशल फॉर यू सर नहीं समझ आ रहा. स्पेशल फॉर यू क्या समझ में नहीं आया, कुछ बताओगे? तो स्पेशल फॉर यू इसका मतलब है कि आपको जिसने सिखाया है ढंग से नहीं सिखाया होगा ना, है ना. आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, आप आइए, है ना. तो एक बार आप क्लासेस कीजिए, है ना, स्पेशल फॉर यू. फिर नहीं समझ आएगा तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं ना, क्यों? हम एज इन द एंटायर टीम विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, बट देन गिव अस अ चांस टू सर्व यू, टू टीच यू. सब्सक्राइब टू अनअकैडमी, यूज माई कोड RAVIFMS, है ना. और उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है फिर बताना. आई विल बी मेंटरिंग यू फॉर द एंटायर ईयर. CAT 21 तो थोड़ा हाथ से निकल गया अब आपके लिए, है ना. बाकी लोग तो खैर प्रिपेयर कर रहे हैं,
पर 22 में हम आपके साथ मेहनत करेंगे, समझे क्या? स्पेशल फॉर यू। सही बोला या गलत बोला? आज थोड़ी आवाज नहीं निकल रही है यार। एनीवे, ट्राई दिस क्वेश्चन पीपल। अच्छा कनुप्रिया, आई थिंक यू आर सेंडिंग द आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। कोई बात नहीं, चलो इसको ट्राई करो। ओके तरुण, स्पेशल आप जो भी कर रहे हैं, है ना, आप 1 साल के लिए आइए, है ना, एंड देन विल वर्क विथ यू। उसके बाद फिर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो फिर बताना, है ना। देखिए जब तक ढंग से नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा माय डियर। कुंजन एंड वैभव, लिटिल कोल्ड, तरुण लिटिल कोल्ड, कनुप्रिया लिटिल कोल्ड इज द आंसर, है ना, मतलब लिटिल कोल्ड एज इन द आंसर इज कोल्ड। थोड़ा और सोचो, ठीक है। थिंक ऑफ द पेयर, थिंक ऑफ अ पेयर। It cannot be aware of every single thing that happens in the world around you. तो ये it किसके साथ जा सकता है? सोचो जरा। क्या हो सकता है पीपल? पेयर्स इसमें निकल के आएंगे। While you think, अच्छा, is there anyone who's still posting the answers? So while you might think that you see or are aware of all the changes that happen in your immediate environment, there is simply too much information for your brain to fully process everything. Tarun, that's absolutely correct, है ना। And this brain के लिए ये it आ रहा है, cannot be aware of every single thing that happens in the world around you, ठीक है। So 1-3 का हमारे पास pair है ना। And then second is saying psychologists use the term change blindness to describe this tendency. कौन सी tendency की बात हो रही है ना, of people to be blind to changes though they are in immediate environment. Fourth is saying sometimes big shifts happen in front of your eyes and you're not aware at all of these changes, है ना। तो यही तो change blindness है जो सेकेंड में बात हो रही है। तो 4 और 2 का भी पेयर हो जाएगा। गुंजन, that's absolutely correct my dear, ठीक है। सो आंसर इसमें अब क्या हो जाएगा पीपल? आंसर क्या हो जाएगा? 1342, है ना, 1342, दैट वुड बी द आंसर इन दिस केस। चलो 17 ट्राई करो। सिद्धार्थ 1342, ठीक है। People, as I said before, these are all CAT 2020 questions, है ना। So if you find these questions difficult, that is the level of CAT, can't help it, है ना। ये थोड़ा सा टफ होगा, सोचो जरा पीपल।
let me try and explain these sentences, then perhaps you will be able to find the answer in this case. Yeah. So it says complex computational elements of the CNS are organized according to a nested hierarchy criterion, है ना. और यहाँ तुम देख सकते हो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका फुल फॉर्म दिया है 17, है ना. इसका फुल फॉर्म यहाँ दिया है. एटलीस्ट हमें एक वीक पेयर मिल गया कि 4 और 1, इस दोनों का जो है हमें एक वीक पेयर तो यहाँ मिल गया कि एटलीस्ट वी नो कि 1 विल कम आफ्टर 4. ठीक है, 1 कैन नॉट कम बिफोर 4, ये चीज़ है ना. सो दोज हु वुड हैव अटेंडेड द क्लास दे वुड नो कि ये आई हैड टॉट कि द एब्रिविएशंस दे ऑलवेज फॉलो द फुल फॉर्म. शिप्रा, इट्स वेरी क्लोज शिप्रा, वेरी क्लोज, है ना. थोड़ा सा और सोचो. ठीक है. So elements, nested hierarchy criterion, the organization is not permanent and can change dynamically. Sorry, let me try and explain it again. Complex computational elements of the CNS are organized according to a nested hierarchic criterion. मतलब nested means they are grouped together, and these groups जो है nested जो है इनमें भी एक hierarchy है. So the organization is not permanent and can change dynamically from moment to moment as they carry out a computational task. कुछ भी जो वो compute कर रहे हैं. Echolocation in bats exemplifies adaptation produced by natural selection. A function not produced by natural selection for its current use is exaptation. ठीक है. मतलब naturally अब में अगर कोई ऐसा function नहीं है पर आप उसको adopt कर लेते हैं और फिर वो आपके अंदर वो function आ जाता है, then that is known as exaptation. ठीक है ना. लेकिन echolocation, that is the bat takes out a sound, है ना, it hits an object, it reflects, and then the bat gets to know कि यहाँ कोई object है, and then therefore it can change its direction and all. So this is produced by natural selection. A function not produced by natural selection for its current use is exaptation. So feathers might have originally arisen in the context of selection for insulation, है ना. So insulate करना था, तो इसीलिए जो है कुछ स्पीशीज में जो है फेदर्स आए होंगे तो ताकि वो इंसुलेट हो जाए, है ना. राइट, जैसे बर्ड्स वगैरह में आप देखते हैं. फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल स्टैंड पॉइंट कंसिस्टेंट विद exaptation, that is adapting to something which is not a part of natural selection, the living organism is organized as a complex of Russian matryoshka dolls. Smaller structures are contained within the larger ones in multiple layers, है ना. तो ये जो मैट्रियोस्का डॉल्स का एक खास बात क्या है कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो हैं डॉल के अंदर मल्टीपल लेयर्स में फिल किए हुए हैं. ठीक है ना. अब एग्जैक्टली मैट्रियोस्का डॉल्स क्या है आप तुम एग्जाम में बैठ के गूगल तो नहीं करोगे, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट 3 इज ट्राइंग टू टेल यू. ठीक है. राइट, दैट्स व्हाट 3 इज ट्राइंग टू टेल यू. हाँ गुंजन एंड कनुप्रिया, थोड़ा और सोचो, यू कुड अराइव एट द आंसर, है ना. थोड़ा सा वैसे मैंने कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए सब बोल दिया था. राइट, द एक्सॉप्टेशन कॉन्सेप्ट एंड द रशियन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग बीइंग्स डिड्यूस्ड फ्रॉम स्टडीज ऑन एवोल्यूशन ऑफ द वेरियस apparatus in mammals, है ना, can be applied for the most complex human organizations, the central nervous system. The exaptation concept and the Russian doll concept, Russian doll organization concept of living beings deduced from studies on evolution of various apparatuses in mammal, है ना. apparatuses in mammals, एक mammal के अंदर अलग अलग apparatus या जो भी है अलग अलग divisions जो भी study हुआ है mammals का can be applied for the most complex human organ. तो human organ के लिए भी apply हो सकता है. ठीक है, तो organ की बात हो रही है तो इसमें apparatus का मतलब क्या, mammals का generally हम organs की बात कर रहे हैं. तो ये जो है basically exaptation concept और Russian doll concept जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए भी अप्लाई हो सकती है, बिकॉज द ऑथर सेज कैन बी अप्लाइड फॉर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ऑर्गन विच इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS. ठीक है, दैट्स व्हाट 4 इज ट्राइंग टू से, है ना. नाउ 1 इज ट्राइंग टू इलैबोरेट ऑन दिस वन, है ना. तो ये भी चीज़ है. अब देखो क्या है कि इकोलोकेशन, एक्सैप्टेशन, है ना, बट इज एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट, है ना. And then it talks about the exaptation concept and the Russian doll concept, है ना. तो इसमें ये भी बात हो रही है of living being deduced, है ना. राइट,
And then you can see from a structural standpoint, consistent with exaptation, the living organisms is organized as a complex of Russian Matryoshka dolls, smaller dolls and structures within larger ones and multiple layers, है ना. तो इसके बारे में बात हो रही है. ठीक है. तो अब सोचो इसमें आंसर क्या हो सकता है पीपल. आंसर क्या हो सकता है. ठीक है. अब देखो 3 और 1 का एक्चुअली इसमें तुम्हारा पेयर बनेगा, बिकॉज इससे स्मॉलर स्ट्रक्चर्स आर कंटेन्ड विथ लार्जर वंस इन मल्टीपल लेयर्स and complex computational elements of the CNS are organized according to a nested hierarchic criteria. So ये 3 की जो analogy है फिर वो 1 के साथ यहाँ पर fit in करती है ना, right? And then 2 में the author first explains exaptation and then talks about the exaptation concept. So this also should give you a hint towards 2 coming before 4, है ना? And therefore the right answer here would become 2, 4, 3, 1. That would be the right answer. ठीक है. 2, 4, 3, 1. People in para jumbles never try to kind of find the opening sentences. ठीक है. Now you people might be wondering कि sir इतना difficult questions क्यों करा रहे हैं. Why should we do difficult questions people? क्यों करना चाहिए हमें difficult questions? जब तक आंसर भी सॉल्व, क्वेश्चन भी सॉल्व करो और इस क्वेश्चन का आंसर सोचो जरा. व्हाई शुड वी सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस? क्या डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक पीपल? देखो अब तुम बोल सकते हो कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो शायद एग्जाम में इट विल अपीयर इजी. नो तरुण, ये वो चीज नहीं है. पहली बात तो ठीक है, वंस यू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस ना, तो मॉडरेट और इजी वाले तो बहुत आसान लगते हैं. और क्या पता कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते यू कुड एक्चुअली बी एबल टू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिफिकल्ट क्वेश्चन का नेचर कैसा होता है ये तो समझ में आया ना, कि डिफिकल्ट क्वेश्चन का नेचर कैसा होता है. वर्बल एबिलिटी में जो है लोग डिफिकल्ट इजी क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है. उनको लगता है या तो पैराजम्बल्स है तो सभी पैराजम्बल्स डिफिकल्ट है तो भैया मैं पैराजम्बल्स करूंगा ही नहीं, या तो फिर उनको लगता है कि पैरासमरी इजी है तो पैरासमरी ही करना है. आरसी पे फिलोसफी पे आ गया तो वो बिल्कुल ही नहीं करना है. साइंस पे आ गया तो करना ही करना है. क्या पता साइंस में डिफिकल्ट आ जाए. ठीक है. सो पीपल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि डिफिकल्ट क्वेश्चन करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन का नेचर पता चल जाता है, ताकि मैं एक रीडिंग करने के बाद आई एम एबल टू जज कि भैया इसको मैं अटेम्प्ट करूं या ना करूं, या मैं खिसक लूं यहां से. ठीक है. ये सबसे बड़ा चीज है ना. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कि देखो ऐसा है ना, अगर कभी भी तुम्हारी लड़ाई होती है ना, तो कोई इजी टारगेट मॉडरेट टारगेट मिले या अपने के बराबर या उससे नीचे मिले तो उसको डिफीट कर दो. पर तुमसे कोई और ताकतवर आए तो बेटा ऐसा है कि कट के निकल लो वहां से. ठीक है. अब मुझे तुम एक चीज बताओ, तुमको क्या पता कि कौन तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है या कौन तुमसे ज्यादा वीक है? until unless you have not fought with a few people, है ना, राइट. जैसे बॉक्सिंग मैचेस की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, राइट. सो इफ यू हैव नॉट फॉट, है ना, वैसे बॉक्सिंग मैच में तो भाग के कैसे जा सकते हो, मतलब ठीक है नॉर्मल लाइफ में भी यार मतलब अंडरस्टूड है ना, मतलब जस्ट गिविंग एन एनालॉजी, राइट. ठीक है. तो जब तुमने कुछ लोगों से फाइट करी है तब तुम्हें पता कि अच्छा ये ज़्यादा स्ट्रांग है, ऐसे लोग ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा वीक होते हैं, है ना. तो पहले तुम्हारे से एक परसेप्शन होता था कि अच्छा ये स्ट्रांग है, ये वीक है ना, राइट. तो ये चीज़ है, राइट. सिमिलरली यहाँ पर भी है. तो ये टफ क्वेश्चंस करने के बाद ना तुम्हें एग्जैक्टली पता चलेगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस जो हैं एक नज़र के बाद जो है मुझे एग्जाम में नहीं करना है. ठीक है. टेल मी वन थिंग पीपल, एग्जाम में क्वेश्चन सिलेक्शन का प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है? क्वेश्चन सिलेक्शन का प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है? होता है ना क्वेश्चन सिलेक्शन का प्रॉब्लम. ठीक है ना. जिसको तुमने सोचा कि हो जाएगा वो नहीं हुआ, जिसको तुमने सोचा कि नहीं होगा और वो हो गया. होता नहीं प्रॉब्लम पीपल. ठीक है. दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट. दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई एम्फसाइज ऑन डूइंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस. ठीक है. वैसे इस अभी तो YouTube में तो क्या है कि इस सेशन में आई एम जस्ट काइंड ऑफ डूइंग ऑल द CAT 2020 क्वेश्चंस, है ना. तो ये चीज़ है.
चलो 18 करते हैं पीपल। कोशिश करेंगे कि चारों क्वेश्चन आज कर डालें, मतलब 24 तक कर डालें। कैट 2020 का सीरीज जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो सकता है इसका आंसर पीपल? It advocated. What advocated? Hint. A conservative approach to antitrust enforcement that espouses faith in efficient markets and voiced suspicion regarding the merits of judicial intervention to correct anti-competitive practices. कि भाई ऐसा है कि मार्केट में फेथ रखो, है ना, कंजर्वेटिव अप्रोच टू एंटी ट्रस्ट इन्फोर्समेंट, है ना। Gunjan, okay, that's a good attempt. थोड़ा सोचो। It advocated a conservative approach to antitrust enforcement. Means they did not like the antitrust enforcement, and this conservative approach kind of advocated or they supported faith in efficient markets, है ना। तो ये भी बात हो रही है। सिद्धार्थ थोड़ा और सोचो सिद्धार्थ। गुंजन थोड़ा सा और ये सोचो, ये इट कहाँ जाएगा बस, है ना। एंड वॉइस सस्पिशन रिगार्डिंग द मेरिट्स ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन टू करेक्ट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। तो अगर जुडिशरी इंटरवीन कर रही है ना, टू करेक्ट द एंटी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, तो ये जो कंजर्वेटिव अप्रोच है, इट वॉइस्ड सस्पिशन रिगार्डिंग दिस, है ना। तो ये चीज़ है। Many industries have consistently gained market share, the lion's share, without any official concern. The most successful technology companies have grown into veritable titans, है ना, on the premise that they advance public interest. That the new anti-competitive risks posed by tech giants like Google, Facebook, and Amazon necessitate new legal solutions could be attributed to the dearth of enforcement actions against monopolies and the few cases of challenging mergers in the USA. तो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस क्या होता है कि कभी कभी कंपनीज मर्ज कर जाती है तो कंपटीशन कम हो जाता है, और आज की डेट में क्या है, गूगल, फेसबुक और अमेजोन जैसे कंपनीज जो हैं, दे आर काइंड ऑफ प्रोड्यूसिंग, है ना, कॉम्पिटिटिव रिस्क्स, दैट इज दे टेंड टू गिव हिंट्स दैट दे माइट एक्चुअली अडॉप्ट दी पाथ ऑफ मोनोपोली, है ना, मोनोपोली बनना चाहते हैं, कंपटीशन नहीं रखना चाहते हैं, है ना।
Then fourth is saying the criterion of consumer welfare standard and the principle that antitrust law should serve consumer interests and that it should protect competition rather than individual competitors was an antitrust law introduced by and named after the Chicago School. और ये जो antitrust law है, ठीक है, right, it advocated a conservative approach to antitrust enforcement that espouses, है ना, faith in efficient market and voice suspicion regarding, है ना, तो ये चीज़ में बात हो रही है, ठीक है. So 4-1, ठीक है, this 8 will follow this 4th, है ना, and then we can have 2 and 3. 2, 3 I think most of the people have got it right, है ना, तो ये चीज़ है. तो 8 एक्चुअली इस कंज्यूमर वेलफेयर स्टैंडर्ड के बारे में बात करें. सो नॉट शिकागो स्कूल, ये कंज्यूमर वेलफेयर स्टैंडर्ड. Did I say Chicago school? No, I think I said 4th option, but हाँ, so it's referring to this particular concept. ठीक है, आगे बढ़े people. Let's do question number 19. What do you think could be the answer in this case, people? Odd one out question, people. Anyone? Okay, Tarun, Gunjan, good attempt. Machine learning models, so you can see human like biases के बारे में बात हो रही है. Part of the ongoing effort against oppressive and abusive language के बारे में बात हो रही है. Racist and violent speech के बारे में बात हो रही है ना. Gay or black are used in offensive or prejudiced ways के बारे में बात हो रही है. So this is all talking about, you know, AI working against abusive language, oppressive language. But all that C is saying is the current automatic detection model misses out on something vital, which is context. Context कहाँ है? बाकी सब क्या है? They're talking about the human biases, you know, violent speech, offensive speech, है ना, aggressive speech, abusive language, है ना, कि बाकी सब उस पर फोकस कर रहा है. But C is talking about context, कि कोई भी चीज़ कहते हो ना, उसके अलग अलग context में अलग अलग meaning हो जाती है ना. ठीक है. So 19 में आपका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा पीपल? इट्स गोना बी सी. ठीक है, चलो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 20.
अच्छा अच्छा, एक सेकेंड. Algorithms struggle to determine if group identifiers like gay or black are used in offensive or prejudiced ways because they are trained on imbalanced data sets with unusually high rate of risk. देखो, जब हम लोग सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं ना सिद्धार्थ, ठीक है, सो दैट सेंट्रल आइडिया कैन बी फॉर अगेंस्ट कुछ भी, है ना. फॉर एग्जाम्पल शुड इंडिया गो ऑन अ वॉर विथ पाकिस्तान, ठीक है, राइट. तो यस वी कैन गो, अगेंस्ट नो वी शुड नॉट गो, है ना. दोनों चीज़ें हो सकती हैं. बट देन whether you're talking about for or against, you're still hovering around the central idea, right? So if you look at E, even if it says that algorithm struggle, they struggle to define what, है ना, group identifiers like gay or black, and these are which are used in offensive or prejudiced ways, है ना, right? So even if it is talking about the negation of these algorithms which tend to struggle, we are still focused on talking about offensive or prejudiced ways of using a language, whether we are talking about gay or black as well. You get the point, Siddharth? But all that, if you look at C, it talks about context. Context का जो है, neither it's about for, it's talking about abusive language. No, it is against the abusive language or the machine learning. Context is anything, है ना. For example, if you tell somebody I like you, है ना, right, it could be, you can tell your mother that I like you. It could be a girl that you can say I like you, and it could be a teacher that you like the teaching and you like the person of the person, so you can say the person I like you. So this I like you has many different meanings in different contexts, right, है ना सिद्धार्थ, ठीक है. So that's what it is saying, ठीक है, context. Okay, Ishita, welcome to the class. ठीक है, चलो let's do question number 20. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कैट में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन. ओके गुंजन, व्हाट अबाउट अदर्स? Come on everybody. तरुण, आहा, ये सब चीजें थोड़ा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा तरुण. हाँ, about women and feminism. We'll keep this as the last question for today, people. Sir, thank you for the critical reasoning classes in Academy. The quality content has helped me a lot to enhance, and it has helped me a lot in my reading comprehension part. Thank you so much, Ishita. I'm glad that you like the session, and it's your effort. I'm just a guiding light, nothing more than that, right? It's your effort. Okay, and my contribution is only 10%, Ishita. It's 90%. It's your effort. ओहो तरुण,
बहुत गलती कर रहे हो. See, the girls have got it right. Gunjan and Shipra. The logic of displaying one's inner qualities through outward appearance was based on a distinction between being a woman and being feminine. And perhaps for men it's very difficult to understand this concept. And so I'm a literary person, so you know, ये चीज़ है. So being a woman and being feminine क्या है? So when you're talking about being feminine, it's all about grace, beauty, aesthetics. You're talking about embracing these things. ठीक है ना? Yes, Ishita, of course, you know, I'll be happy to be your mentor to you, you know, in your entire journey, right? तो ये चीज़ है. ठीक है. Hope you enjoyed the other classes and all as well. See you soon at the platform. And so everybody try and explore. Unacademy is a fantastic platform, you know, if you ask me. तुम्हें कहीं कम्यूट नहीं करना है, घर से बैठ के तुम पढ़ाई कर रहे हो, है ना. इट्स वेरी चीप एज वेल, इट्स कन्वीनियंट. इवन इफ यू मिस अ क्लास यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग. और एक क्लास में चलो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो तुम 2 बार 3 बार उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हो, और ठीक है, उससे भी तुम चीज़ें सीख सकते हो. फैंटास्टिक प्लेस, यू नो. I kind of enjoy, and the beauty is, you know, it gives complete liberty to students. तुमको जिससे पढ़ने का उससे पढ़ो. टीचर्स को भी कंप्लीट लिबर्टी है कि जैसे कोर्स प्लान करने का करो, बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए बस. नहीं होगा तो यू आर आउट फ्रॉम हियर. ठीक है ना? Yes, Ishita, yeah, thank you for reminding me about that. So 29th of October से people, by reading my RC class for CAT 22 is starting, है ना. So subscribe to my page here on Unacademy and you will be able to find the course, है ना. तो ये चीज़ है. Anyway, so चलते हैं. चलो. Thank you for that, Ishita. Thank you for that lovely compliment and reminding that the course is going to be launched. Anyway, so it says, you know, the logic of displaying one's inner qualities through outward appearance was based on a distinction between being a woman and being feminine, है ना. Appearance became a signifier of conduct. To look was to be, and conformity to the feminine ideal, है ना. So when you talk about feminine, is all about embracing, है ना. Masculinity, femininity की बात हुई थी. So femininity is all about grace, beauty, gentleness, है ना, and aestheticism. So इन सब चीज़ों पे focus करता है. So now you understand people कि for a woman, है ना, why this outward appearance becomes very important. So much so that women, they tend to go into depression because of this, right? And there's a huge market that has been a $1 billion market है, you know, that focuses on women appearance. Men के लिए चलो men के लिए important है, but we may not take it as seriously as it, you know, but then it's very important for them, right? तो ये चीज़ है. So when men dress, थोड़ी सा digress कर रहा हूँ मैं, but when men dress, they dress for others, maybe to impress women, to, you know, kind of ace over their colleagues in the office, है ना, right? But when a woman dresses up, ठीक है, it's ठीक है, बाकी दूसरों के लिए भी है, but she does it for herself also, है ना. So because it's part and parcel of her, who she is, ठीक है. So appearance became a signifier of conduct. To look was to be, and conformity to the feminine ideal was measured by how well women could use the tools of the fashion and beauty industries, है ना. So यहाँ से भी हमें हिंट मिल जाता है कि ये फेमिनिज्म की जो बात हो रही है, फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है. C says the makeover-centric media set out subtly and not so subtly the good and bad ways of to be a woman, layering these over inequalities of race and class. अभी समझते हैं ये good और bad ways का मतलब क्या है. D says the denigration means belittling the working class women and women of color, often, you know, centers on their perceived failure to embody feminine beauty. And from the other sentence we can see feminine beauty is towards, you know, outward look. Yes, her individuality, Shita, that's absolutely right. So women was considered a biological category, but femininity was a process by which women became specific kinds of women, है ना. So ठीक है, you're born as a woman, but through the process of embracing femininity, again, you know, the outward appearance, you could become the person that you want to become, right? So that's also is what it is talking about, right? ठीक है. So you can see A, B,
D and E, they focus towards feminism, adopting feminism, which essentially here is related to outward appearance. But C says the makeover centric media set out subtly and not so subtly good and bad ways to be a woman, layering these over inequalities of race and class. Good and bad ways of to be a woman means ये जो मीडिया है इसकी बदमाशी क्या थी कि ये चुपके चुपके जो है ये वुमेन के लिए रूल सेट कर रहे थे कि ऐसा है कि इफ यू वांट टू बी अ गुड वुमन, कंसिडर्ड गुड वुमन, यू हैव टू बिहेव लाइक दिस, इफ यू वांट टू बी अ बैड वुमन, यू हैव टू बिहेव लाइक दिस, है ना. इफ यू बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर रेस, दिस पर्टिकुलर क्लास, यू हैव टू बिहेव लाइक दिस, इफ यू बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर रेस, दिस पर्टिकुलर क्लास, यू हैव टू behave like this. So ये good and bad ways to be a woman, this sentence focuses on behavior, right, while the other sentences they focus towards the outward look, है ना. तो ये चीज़ है, ठीक है, राइट. तो ये चीज़ है, दैट इज वाई इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. तरुण समझ में आया लड़के? तो फेमिनिन लिटरेचर वगैरह भी पढ़ो, थोड़ा चेकलिस्ट वगैरह भी थोड़ा पढ़ लो, नहीं राइट. समझ में आया एवरीबॉडी ना. तो ये चीज है, क्लियर है फोकस पीपल, क्लियर है, ठीक है. तो चलो आज यहीं पे एंड करते हैं. विल कंटिन्यू फर्दर, डोंट वरी पीपल, वी आर गोइंग टू हैव अ फ्यू मोर सेशंस, है ना, ठीक है. या मजा आ रहा है तो कुछ और क्वेश्चंस कर लें क्या? क्या बोलते हो, क्या बोलती है पब्लिक? जैसा बोलो वैसा करेंगे. और क्वेश्चंस करना है? Because I can still see people are interested. Yes sir, please continue. चलो यार कंटिन्यू कर ही लेते हैं फिर. चलो समरीज की बात करते हैं. आई मोस्टली मिस्टेकन. गुंजन, अरे क्या बात है. यस, मोर क्वेश्चन. अरे जोश है आज लोगों में. चलो भाई कर लेते हैं, सही है. तरुण ये चीज सुधारो यार. हाँ ठीक है. व्हाट इज लाइफ विदाउट लव? नथिंग, है ना. And then if you ask me what is love in the case of CAT, in the case of life, love is everything, नहीं? अरे हाँ, CAT भी पास करना है. इंडिया का ना एक बड़ा प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे भी मैं बोल देता हूँ. लाइफ के ना दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं. टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस पीपल. वन इज लव और मैरिज, द अदर इज करियर, है ना. ये दोनों डिसीजंस जो हैं हम या तो भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं या अपने फैमिली पे छोड़ देते हैं, ठीक है. पीपल जिंदगी में कुछ हो या ना हो ना, इन दोनों में से एक डिसीजन तो सही लो, ठीक है. अगर दोनों तुमने सही ले लिया तो मतलब ऊपर वाला तुम्हारे ऊपर बहुत मेहरबान है, अगर दोनों डिसीजन तुम्हारे सही हो गए, ठीक है ना. लेकिन इंडिया में क्या, ये दोनों डिसीजन जो है या तो सोसाइटी अपने ऊपर कब्जा कर लेती है या फिर एक बंदा जो है या बंदी जो है उसने ऊपर वाले पे छोड़ दिया है कि ऊपर वाला जो करेगा देखेंगे. बट ऑलवेज रिमेंबर गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना. सही बोलो ना. चलो 21 करते हैं. क्या बात है, क्या बात है. शिप्रा, सिद्धार्थ, आई डोंट नो इफ द आंसर इज राइट और रॉन्ग, बट वेटिंग फॉर अदर्स टू रिस्पॉन्ड. एक दो आंसर्स और आ जाए फिर मैं डिस्कस करता हूँ. चल तब तक जो है मैं थोड़ा जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ पैराग्राफ. सो द डोमिनेंट हाइपोथेसिस, इन द मीन टाइम यू कैन पीपल पोस्ट योर आंसर्स एज वेल, है ना. सो द डोमिनेंट हाइपोथेसिस इन मॉडर्न साइंस बिलीव that language evolved to allow humans
टू एक्सचेंज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड। अब ये क्या रहा कि मॉडर्न साइंस का लॉजिक है ना, राइट। बिलीव दैट लैंग्वेज इवॉल्व टू अलाउ ह्यूमंस टू एक्सचेंज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल वर्ल्ड, है ना। मतलब दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ ट्री, दिस इज अ माउंटेन and so on and so forth, है ना, factual information, right? This is circular in shape, I mean, not circle exactly, ठीक है। But an alternative view is that language evolved in modern humans at least to facilitate social bonding। ये वाला ऑप्शन क्या है, ये social bonding के बारे में बात कर रहा है people, ठीक है, right? तो मतलब क्या है कि modern science focus on rational thinking। There's one part of the language which people say कि it focuses on rational thinking, and there is this another part of the language which says it focuses on social bonding, which essentially is, you know, you're talking about emotions, है ना। emotions के अलावा तुम rationally तो नहीं ना मतलब social bonding करोगे। let us discuss the process of you know what a catalyst can do in chemistry, है ना। क्या हम लोग इस तरह से मतलब करते हुए social bonding करोगे क्या, दोस्त वगैरह बनाओगे क्या, नहीं ना। so it increases our ancestors' chance of survival by enabling them to hunt more successfully, है ना, और टू कोऑपरेट मोर एक्सटेंसिवली। सो दिस लाइन किसके बारे में बात कर रहा है, ये जो सोशल बॉन्डिंग है, इसके कारण क्या था, एंसेस्टर्स सर्वाइव कर रहे थे, है ना, बाय इनेबलिंग देम टू हंट मोर सक्सेसफुली और टू कोऑपरेट मोर एक्सटेंसिवली। लैंग्वेज मेंट दैट थिंग्स कुड बी एक्सप्लेन्ड एंड दैट प्लान्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस कुड बी शेयर्ड एफिशिएंटली, है ना। तो ये वाला भी पॉइंट है, कोऑपरेट एक्सटेंसिवली और पास्ट एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो, तो ये सोशल बॉन्डिंग की बात हो रही है। और मॉडर्न साइंस, है ना, दैट इट इज़ फॉर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, है ना, इसके बारे में भी बात हो रही है, ठीक है। ओके गुंजन, सो यू ऑल्सो गो विथ सी ऑप्शन। व्हाट अबाउट अदर्स, आप जरा बताओगे आंसर क्या होगा। तरुण चलेगा क्या, आज गगनेश नहीं आया, क्या बात है, मिस कर रहा हूँ गगनेश को आज। हाँ जी, अदर्स आंसर क्या है। So it says, you know, that since its origin, language has been continuously evolving to higher forms, from being used to identify objects to ensuring human survival by enabling our ancestors to bond and cooperate, है ना, right? ये देखो सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। But it says कि language evolve हुआ है ताकि social bonding हुए, पर ये क्या रहा है, has been continuously evolving to higher forms। हायर फॉर्म्स का मतलब क्या है ना, मतलब हम क्या कैलकुलस और उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं क्या। तो ये हायर फॉर्म्स वाला जो है ना, ये थोड़ा सा पंगा कर रहा है ना। बी कह रहा है कि फ्रॉम द बिलीव्स दैट ह्यूमंस इन्वेंटेड लैंग्वेज टू प्रोसेस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, स्कॉलर्स नाउ थिंक दैट लैंग्वेज वाज द आउटकम ऑफ द नीड टू इंश्योर सोशल कोहेजन एंड दस ह्यूमन सर्वाइवल, ठीक है। थोड़ा सा सही लग रहा है अभी फर्स्ट रीडिंग में, ठीक है। तो अब इसको एलिमिनेशन के लिए रखेंगे, तब तक आगे के ऑप्शंस को देखते हैं। सी कह रहा है मोस्ट बिलीव दैट लैंग्वेज ओरिएंटेड फ्रॉम अ नीड टू आर्टिकुलेट फैक्ट्स। आर्टिकुलेट फैक्ट्स मींस स्टेटिंग और एक्सचेंजिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, तो ठीक है। बट अदर्स थिंक इट इमर्ज फ्रॉम द नीड टू प्रमोट सोशल कोहेजन एंड कोऑपरेशन, thus enabling human survival, है ना। सो नीड टू इंश्योर सोशल कोहेजन और प्रमोट सोशल कोहेजन। अब देखो, जब भी दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो ना, तो पहले देखो कि दोनों में डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज क्या है, डिफरेंस, है ना। तो भाई पैसेज जो है प्रमोट करने की बात करता है, इंश्योर नहीं कर सकते हो ना, है ना। तो सी देन बिकम्स अ बेटर आंसर देन बी, है ना। डी says experts are challenging the narrow view of the origin of language as being merely used to describe facts and label objects to being necessary to promote more complex interactions among humans। complex interactions का मतलब क्या, सोशल बॉन्डिंग होगा। डी तो बहुत ही घटिया ऑप्शन है, तो ये तो बिल्कुल ही हमने एलिमिनेट कर दिया, है ना। तो ये चीज़ है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वुड देन बिकम सी। सबका सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं पीपल। पीपल मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं कल से फ्री क्लासेस ऑन ग्रामर कंडक्ट कर रहा हूँ एट 12 PM ड्यूरिंग द डे, है ना। एक घंटा पूरा ग्रामर जो है 8-10 क्लासेस में आपको मैं पूरा ग्रामर रिवाइज करा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दूंगा, सब कुछ करा दूंगा, ठीक है।
तो ग्रुप ज्वाइन कर लो। कल से जो है फ्री क्लासेस जो हैं 12 बजे दिन में ज़बरदस्त चलेगी। चलो ज़रा 22 करते हैं पीपल। ओ बाबा 10:29 हो गया। लेट्स कीप दिस एज लास्ट। मैं और सेशंस ऑर्गेनाइज कर दूंगा, बस आज के लिए थोड़ा सा लास्ट रखते हैं। हाँ जी जनता, आंसर क्या होगी इसमें? आंसर क्या होगी आंसर क्या होगा इसमें? आंसर क्या होगी? हाँ सही है। पीपल इधर अनअकैडमी में फॉलो कर लेना। कल से 12 PM ग्रामर कैप्सूल। कोर्स सारे ग्रामर के पूरे कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज कर लूँगा, और कोशिश करो ये टेलीग्राम टू भी जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। Gunjan, okay, noted. That's actually a fantastic attempt. Yeah. What about others? सोच पकड़नी होती है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, है ना। एक बार ये सोच पकड़ लो ना तो फिर अपने आप क्वेश्चन जो है ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है फोक्स, चलो in the meantime other people think of the answer. I'll just explain the paragraph here. So it says, aesthetic political representation urges us to realize that the representative has autonomy with regard to the people represented, but autonomy then is not an excuse to abandon one's responsibility. Aesthetic मतलब क्या? sense of beauty. तो ये political representation में sense of beauty क्या है कि भाई ये जो representative है ना, जो represents the people has autonomy with regard to the people represented. तो जो लोग हैं with regard to them उसके पास क्या autonomy होती है, मतलब वो खुद के decisions ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन autonomy का मतलब ये नहीं है कि one is not an excuse to abandon one's responsibility. अपनी responsibility को ना abandon नहीं कर सकते। मतलब कहने का क्या है कि ज़्यादा freedom मिल गई, आज़ादी मिल गई तो मज़े कर रहे हैं, है ना। तो ये नहीं है कि मतलब क्या है कि आज़ादी है, freedom है, autonomy है, तुम वो कर सकते हो जो तुम्हारा मन हो, तो उससे तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ों को हैंडल करनी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, है ना, एज अ रिप्रेजेंटेटिव, है ना। दिस इज सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी, है ना। सो एस्थेटिक ऑटोनॉमी रिक्वायर्स कल्टिवेशन ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस, है ना। एस्थेटिक ऑटोनॉमी रिक्वायर्स कल्टिवेशन ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस। डिसइंटरेस्टेडनेस का मतलब क्या है? जैसे मान लो इलेक्शन हो रहा है
कोई पूछता है कौन जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, अब वो कहता है मीनू की, है ना, तो वो इंटरेस्टेड है कि भाई कोई भी जीते क्या होगा, नहीं होगा, है ना, तो ये चीज़ है। तो अब एस्थेटिक ऑटोनॉमी रिक्वायर्स कल्टीवेशन ऑफ डिसइंटरेस्टेड, तो ये डिसइंटरेस्टेड क्यों होना पड़ेगा एक रिप्रेजेंटेटिव को, आगे समझते हैं क्या कह रहा है पैराग्राफ, ऑन द पार्ट ऑफ एक्टर्स विच इज नॉट इंडिफरेंस। अब ये डिसइंटरेस्टेड इंडिफरेंस नहीं, इंडिफरेंस क्या है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है ना, शिवम एंड शाग्यान, ओके फैंटास्टिक, ठीक है, राइट, सो इज नॉट इंडिफरेंस, टू हैव डिसइंटरेस्टेडनेस, है ना, that is to have comportment towards the beautiful that is devoid of all ulterior references to use। तो ये comportment का मतलब क्या है अभी देखते हैं, है ना, मीनिंग तो बता सकता हूँ लेकिन पहले मीनिंग डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि पैराग्राफ से क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। So it says to have disinterestedness, that is to have comportment towards the beautiful that is devoid of all ulterior references to use, requires a kind of aesthetic commitment. It is the liberation of ourselves for the release of what has proper worth only in itself. Tarun and Siddharth, okay, fantastic, है ना। So it says to have disinterestedness, है ना, is to have comportment towards the beautiful, that is a sense of duty। वैसे basically comportment का मतलब होता है behavior, पर यहाँ कौन से behavior की बात हो रही है। So duty is a kind of behavior also, no? When you have a duty towards something, so towards the beautiful that is devoid of all ulterior references to use, मतलब तुम कोई भी काम करते हो उसके नीचे कोई ulterior reference नहीं होना चाहिए, requires a kind of aesthetic commitment, है ना। तो ऑथर ने ये aesthetic वर्ड बड़ा यूज कर रखा है, मतलब क्या है कि जो कमिटमेंट है उसमें भी एक सेंस ऑफ ब्यूटी है, इट इज द लिबरेशन ऑफ आवरसेल्व्स फॉर द रिलीज ऑफ व्हाट हैज प्रॉपर वर्थ ओनली इन इटसेल्फ। कहने का मतलब क्या है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द पैराग्राफ। जैसे कोई रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे हमारे नेता लोग हैं, है ना, अब मान लो क्या है कि उन्होंने कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ठीक है, राइट, तो कल ये डिसइंटरेस्टेड समझा रहा हूँ, तो भाई अगर तुमने हाउसिंग प्रोजेक्ट गरीबों के लिए लॉन्च किया है, ठीक है ना, एक सेकेंड को शुभम, ठीक है, तो अगर तुमने हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, तो अब क्या एक नेता इसीलिए गरीबों को घर दे रहा है ताकि ये गरीब जो है नेता को वोट दें, हाँ, ठीक है, तब तो यू आर डूइंग इट फॉर अ वेरी सेल्फिश रीजन। तो डिसइंटरेस्टेड मतलब क्या, अगर मैंने हाउसिंग प्रोजेक्ट गरीबों के लिए लॉन्च किया है तो भाई गरीब का भला हो, बदले में मुझे कुछ मिले ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई एम डिसइंटरेस्टेड, है ना। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है कि अरे गरीब जो है बिना घर के रहे, बारिश में ऐसे ही भीगते रहे, धूप में ऐसे ही मरता रहे, भाड़ में जाए, अपन को क्या है ना, अपन करेंगे मजा, ठीक है, उसमें क्या है वो इंडिफरेंस हो गया, ठीक है, तो ये नहीं करने का है। तो ऑथर क्या बोल रहा है कि डिसइंटरेस्टेड, दैट इज तुम उनके लिए कुछ करो तो बदले में कुछ ना एक्सपेक्ट ना करो, है ना। तो टू हैव डिसइंटरेस्टेड, तो तुम कुछ भी कर रहे हो ना, इसमें कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं होना चाहिए, है ना, जो तुम कर रहे हो, है ना, राइट, एंड यू हैव टू लिबरेट योरसेल्फ। तो जो तुम काम कर रहे हो उस काम के वर्थ का काम करो, है ना। अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट कर रहे हो तो हाउसिंग प्रोजेक्ट ही लॉन्च करो, ये नहीं कि हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम पे जो है इधर क्या किए, करप्शन कर दिया, है ना, 1000 करोड़ का हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया, पता चला कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो है 300 करोड़ खुद ही खा गई, है ना। तो ये नहीं, अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट गरीबों के लिए काम करे तो भाई वही चीज़ करो। यही है तुम्हारा एस्थेटिक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ इसके पास ऑटोनॉमी है और नेता जो है वो डिसइंटरेस्टेड है ना। तो ये चीज़ बात हो रही है इसमें, क्लियर है, समझ आया पीपल, है ना। अब एस्थेटिक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एडवोकेट्स ऑटोनॉमी फॉर द रिप्रेजेंटेशन मैनिफेस्टेड थ्रू डिसइंटरेस्टेड व्हिच इटसेल्फ इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिफरेंस। तो यहाँ तक सही है, ए में कोई दिक्कत फिलहाल जो है नहीं लग रहा है ना, ठीक है। बी कह रहा है एस्थेटिक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एडवोकेट्स ऑटोनॉमी फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स ड्राइंग फ्रॉम डिसइंटरेस्टेड व्हिच इटसेल्फ इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिफरेंस। ये भी अब सही लग रहा है। अब ए और बी तो क्या है कि काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन पहले सी और डी को देख लेते हैं। डिसइंटरेस्टेड इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिफरेंस एज अ फॉर्मर मीन्स अ नॉन सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। देखो डिसइंटरेस्टेड का मतलब ये नहीं होता कि नॉन सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कहीं बात हो रही है रिच और पुअर की, यू कैन बी सब्जेक्टिव, दैट इज यू कैन फोकस टुवर्ड्स हेल्पिंग द पुअर मोर देन द रिच, है ना। अब जैसे कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है तो किसी पैसे वाले लोगों के लिए तो नहीं लॉन्च करोगे, किसी के लॉन्च करोगे पुअर के लिए, तो वहाँ तो तुम सब्जेक्टिव हो रहे हो, बाइस्ड हो रहे हो, है ना। सो वी कैन नॉट से दैट यू हैव टू बी नॉन सब्जेक्टिव इन सच केसेस, है ना। तो सीधे उसमें गलत हो जाएगा। डी कह रहा है डिसइंटरेस्टेड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंडिफरेंस इज बेसिस ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, नहीं इट रिक्वायर्स, है ना। तो ये वाला चीज़ जो कह रहा है कि वन हैज़ टू रिक्वायर्स कल्टिवेशन ऑफ दिस, है ना, इट्स नॉट द बेसिस, ठीक है ना,
राइट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का, ये गलत हो जाएगा फिर ऑप्शन. नाउ वी आर लेफ्ट विद ए एंड बी. नाउ इट इज सेइंग दैट इट इज मैनिफेस्टेड थ्रू डिसइंटरेस्टेड. मतलब क्या है कि अगर आप डिसइंटरेस्टेड नहीं है तो आप ऑटोनॉमी को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते. मतलब एक नेता अगर डिसइंटरेस्टेड नहीं है तो उसके पास आज़ादी नहीं हो सकती है. ये तो गलत हो जाएगा ना. आज़ादी है, ठीक है, ऑटोनॉमी है, लेकिन वो क्या है कि उसके साथ साथ द पर्सन नीड्स टू ड्रॉ फ्रॉम डिसइंटरेस्टेड, है ना. तो rather than using the word manifested, we'll go with drawing from. Therefore, B here then becomes the right answer. ठीक है, समझ आ रहा है पीपल, है ना. तो ये चीज़ है. तो आइए अनअकैडमी थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, है ना. आप हमारा कोड यूज़ कीजिए एंड आई विल बी योर मेंटर, है ना, स्पेशली फॉर प्रिपेयरिंग फॉर CAT 22, है ना. कल फिर 9 बजे इसी टाइम पे मिलते हैं. कल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करेंगे और फिर जो है अगले दिन जो है फिर पैरा बेस्ड क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे, है ना. तो आज के लिए बस इतना ही, है ना. तो ये CAT 20 का सीरीज चल रहा था. 2 और क्वेश्चंस बचे हैं CAT 20 के, उसको हम लोग देखें. 10:40 हो गया तो थोड़ा सा ये भी है कि विल कॉल इट अ डे. थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है. 1 घंटे का जो है यूजुअली हम लोग लेते हैं सेशन, है ना. तो फैंटास्टिक कोर्सेस एंड ऑल अवेलेबल है पीपल. सो काइंड ऑफ व्हाट्स दिस, राइट. मेरे अभी एक CAT 22 बैच चल रहा है. अभी और भी बैचेस आने वाले हैं पीपल, एंड विल डू सम फैंटास्टिक स्टफ हियर, है ना. तो ये चीज़ है, राइट. और कुछ और हमारे अच्छे और भी एजुकेटर्स हैं, उनके भी बैचेस चल रहे हैं. सो यू कैन काइंड ऑफ लर्न फ्रॉम देम एज वेल, है ना, राइट. तो ये है. एंड पीपल प्लीज़ फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. बस ऐप डाउनलोड कीजिए, है ना. अपना फ़ोन नंबर डालिए. इनविटेशन कोड मांगेंगे आपसे, तो इनविटेशन कोड में आप हमारा कोड डाल दीजिए, RAVIFMS, है ना. और बहुत सारे फ्री क्लासेस हैं, बहुत बढ़िया फ्री क्लासेस है ना. यू कैन काइंड ऑफ यूज़ इट. यू कैन वॉच द अनअकैडमी सेशंस ऑन योर लैपटॉप एज वेल, है ना. तो ये चीज़ है. थैंक यू गुंजन, सीखने में कुछ मिला, अच्छा लगा, है ना. तो ये भी है, ठीक है, राइट. 10% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप मेरा कोड भी यूज़ करेंगे अगर सब्सक्रिप्शन में. और अनअकैडमी तो वैसे भी इतना चीप है यार, मतलब, है ना. प्लस वाले में अगर तुम जाओगे तो इट्स लाइक डर्ट चीप, है ना. इफ़ यू टेक 18 मंथ सब्सक्रिप्शन तो आई थिंक लेस देन 1500, आई थिंक 1300 समथिंग कुछ आता है पर मंथ. उसमें भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना. और क्या चाहिए, राइट. और लॉन्गर टर्म लोगे तो और तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है. तो ये चीज़ है. थैंक यू सिद्धार्थ, है ना. थैंक यू गुंजन. मिलते हैं. आज थोड़ी आवाज़ थोड़ी ठीक से निकल नहीं रही है, कान भी दर्द है, थोड़ी सर्दी भी हो रही है अपन को. हाँ, अरे भाई अब जाते जाते इतने सारे स्टूडेंट्स कहाँ से आ गए क्लास में, हैं. 14 वॉचिंग राइट नाउ. मतलब ये तो एल्गोरिथम बता रहा है, एक्चुअली इसके पीछे और भी होगा जो लोग होंगे क्लास में. 15 हो गया. अरे भाई साहब, मतलब हद हो गई. सब 11 बजे जागते हैं क्या? चलो कोई नहीं. सो पीपल हु आर कमिंग हियर राइट नाउ, कल 9 बजे फिर मिलते हैं, है ना. तो ये चीज़ है, राइट. ओके folks, good night and all the best for the forthcoming exams. Good night.